Okay, students, today we shall be looking at chapter number 10, okay, from our science textbook, class 10th, and the name of the chapter is Light Reflection and Refraction. So, in the previous classes, we have studied what is light, हमने पढ़ा है light के बारे में, and we have also studied some basic properties of light also. So, first of all, let us look at some basic formulas or some basic points before we dive into this chapter. So the first one is light. What does light mean? We have already studied that light is an electromagnetic wave or electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation मतलब क्या होता है? It means that the electric waves or the electric field and the magnetic field are mutually perpendicular to each other. That is, if magnetic field is in x plane, okay, it is propagating, it is moving in x plane, then the electric field will be in y plane. So x and y axis हमको पता है both are at 90 degrees to each other, so they are mutually perpendicular. So light being an electromagnetic wave, it does not need any medium to propagate or to travel. Best example हम देख सकते हैं when the light from our sun, okay, the solar system में जो हमारा sun है star, उससे जो light हम तक पहुँचता है, okay, it moves with the speed of light, okay, and it takes roughly around 8.5 minutes to reach to the earth from sun. And I am sure that you know what is the speed of the light, that is 3 into 10 raised to 8 meters per second. And what is the astonishing thing, मतलब यहाँ पे बहुत ही क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है. दैट इज देर इज नो एयर, इट इज कम्प्लीटली वैक्यूम, एंड इवन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्टिंग प्रोमिनेंटली. मतलब है, देर इज सम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, दैट इज वाई ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, बट gravitational force has a very weak effect on the light. So without the medium, without any medium, the light is traveling from the sun to the earth. So that is the speciality of light. So, and that is the case with any electromagnetic radiation, may it be radio waves or cosmic rays. All the electromagnetic rays have this special property. So light, okay, light, what does it mean? An object reflects light, okay, keyword reflects light, as we are studying reflection and refraction, okay. So reflection and refraction are the frequent words that we are going to be using. So an object reflects light that falls on it, okay. This reflected light when received by our eyes enables us to see things. मतलब क्या होता है, ये जो light एक object पे पड़ता है, okay, they are, let us assume they are rays now, okay, single rays, एक beam, light का एक beam जो होता है, when it falls on an object, वो जो beam है वो object के ऊपर पड़ के वापस bounce होता है, it will reflect back, and when the reflected ray, मतलब जो bounce back होके हमारे eyes में जाता है, we know that behind the retinas cones and rods होता है, okay, they are the sensory parts of our eyes which will reflect, which will absorb these reflected lights, and a clear image is formed, okay, clear inverted image मतलब उल्टा होता है, it is topsy turvy, image is formed at the back of our retina, okay, and then some nerves will take it to the brain, and all those things will happen which is biologically related. Let us not get into that, but हमें क्या अभी समझना है कि लाइट एक ऑब्जेक्ट पे जब पड़ता है, that light ray is reflected, bounce होता है, just like a ball which thrown at a wall will bounce back. So that reflected light, when it reaches our eyes, we are able to see the things. So next one क्या है, reflection of light. यहाँ पे दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक दूसरा नाम दिया है, दैट इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. अब ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है ये स्पेक्युलर क्या है और ये डिफ्यूज़ क्या है.
All you have to remember is regular and irregular. So इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. When reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another. The reflected light goes in one particular direction. This is regular reflection. यहाँ पे हम diagram देख सकते हैं. See, this is the body. This gray part, this gray solid part is the body, and we can see that the surface of the body is very smooth. मतलब यहाँ पे जैसे उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे नहीं है. बॉडी बिल्कुल भी स्मूथ है, बिल्कुल भी स्ट्रेट है, ओके. और यहाँ पे ये जो लाइट्स गिर रहे हैं यहाँ पे विदाउट द एरोज एट दिस एंड, ओके, विदाउट द एरोज एट दिस एंड, दोज आर कॉल्ड द इंसिडेंट रेज. मतलब जो बॉडी पे इंसिडेंट हो रहे हैं, जो बॉडी पे गिर रहे हैं. और ये जो रेज हैं जो जिनको एक एरो मार्क है, वो है रिफ्लेक्टेड रेज. सो वी कैन सी दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू वन अनदर, इजंट इट? सी, ऑल दीज थ्री reflected rays are parallel to each other. Why? Because the body on which it is reflecting is parallel, and that is why the reflected rays are parallel. Now coming to the diffuse reflection or irregular reflection, यहाँ पे जो हमने पढ़ा है. So irregular reflection में क्या होता है? जो body rough है, मतलब smooth नहीं है, when the reflecting surface, this is called reflecting surface, this also is rough, the parallel rays falling on it is reflected in different directions. मतलब ये parallel ही गिर रहे हैं यहाँ पे, okay, all the lines are parallel at initially, but because the surface is not smooth, it has some different directions में वो उबड़ खाबड़ नीचे हो रहा है, just like a, you know, a rough mountain of a, or a rough road. Imagine this as a tar road and this as a kacha road which you have in villages. So it has a lot of, you know, stones, pebbles and all those things, so it is not reflective that much. But when you are traveling on the highway, in this case you can see some, you know, reflections at a distance, something like, you know, there is some water in between. That is because it has a smooth and, you know, a well polished surface. So that is the example of regular and irregular reflection, okay. So next we shall study about laws of reflection of light. Now this is a very important law, rather two laws, okay. First we shall be studying about reflection, मतलब bouncing back of light. So according to the law of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So what does it mean? So let us look at here one diagram. We have a plane mirror here. Plane mirror मतलब जिसका एक साइड होता है ओपेक और दूसरा साइड होता है रिफ्लेक्टिव. मतलब एक ग्लास लेते हैं और उसके पीछे एक सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑल दी इंसिडेंट रेज, जो भी रेज उसके ऊपर पड़ता है, इट इज बाउंस्ड बैक, इट इज पॉलिश्ड. सम मिरर्स आर, यू नो, फाउंड विद द हेल्प ऑफ पॉलिशिंग. You can search in Google or YouTube how mirrors are made. There are many methods of making a mirror. So here we have a plane mirror. Plane mirror क्यों? Because here we can see it is a 180 degree, okay, plane mirror. Then we will be seeing some curved mirror also. So now we see that angle of incidence is equal to angle of reflection. ये जो ray यहाँ पे गिर रहा है, okay, you can track my cursor. ये जो गिर रहा है, this is called incident ray, okay, incident ray. And the ray which is bouncing back after, you know, falling on this plane mirror is called reflected ray. और ये जो प्लेन मिरर है, इसके बीच में एक नॉर्मल, मतलब दिस एंगल, ओके, दिस कंप्लीट एंगल, रेड लाइन और ये प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ओके. दिस रे इज कॉल्ड नॉर्मल रे. मतलब यहाँ पे कोई लाइन बाउंस रे बाउंस बैक नहीं होता, बट दिस इज जस्ट फॉर आवर रेफरेंस. सो द एंगल बिटवीन the incident ray and the normal ray is called angle of incidence. ये देखो, incident ray, normal ray, इसके बीच में जो angle है वो है angle of incidence. Similarly ये है reflected ray और ये है normal ray. So इसके बीच में जो angle है उसको बोलते हैं angle of reflection. So law of reflection ये बोलता है कि angle of incident is equal to angle of reflection. Okay, that is the first point.
सो इसको अगर हम एंगल आई पकड़ लें और इसको एंगल आर पकड़ लें, आई बिकॉज इंसिडेंट, आर बिकॉज रिफ्लेक्टेड, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. The second point is the incident ray, okay, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, मतलब ये line, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. यहाँ पे देख सकते हैं incident ray, normal ray and reflected ray all are originating from this point itself and all are in the same plane. मतलब ये हो गया x प्लेन और ये हो गया y प्लेन, सो दे आर इन द सेम प्लेन इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. ओके, सो दीज वर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. ओके, मतलब जो भी सरफेस रिफ्लेक्ट करता है then we can apply the law of reflection there. This is not only to the plane mirror but also to the spherical mirror. Okay, now objects तब से हम बोल रहे हैं, so there are some different types of objects we have to study. Basically object क्या होता है? Anything which gives out light rays, either its own or reflected by it is called an object. मतलब जो भी चीज़, कोई भी चीज़, either it should emit light, मतलब खुद लाइट प्रोड्यूस करके एमिट करना चाहिए, और उसके ऊपर अगर लाइट रे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचना चाहिए लाइट रे. सो एनी ऑब्जेक्ट विच डज दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो उसमें हमारे पास है दो टाइप, विच इज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो खुद खुद के लाइट एमिट करते हैं, सी विच एमिट देयर ओन लाइट. एग्जाम्पल्स है, बेस्ट एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा, जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करते हैं और एमिट करते हैं. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर लाइट. रिफ्लेक्ट तो हमें पता है, बाद में हम पढ़ेंगे कि स्कैटर क्या होता है. अभी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसके ऊपर जो लाइट पड़ता है ना, इट विल जस्ट बाउंस बैक, वो फेंक देता है लाइट को, जो भी इंसिडेंट है. एग्जाम्पल are everything, like except these all other are non-luminous objects. Even you can add mirror here, they have not added but you can add. So the next thing that we are going to study is images. These are some important terminologies which you better write down, okay, as I am explaining. So image क्या होता है? Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. मतलब समझो हमारे पास एक मिरर है एंड वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. क्या होता है नॉर्मली, द मिरर्स विच वी हैव इन आवर होम, ओके, आवर इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर एट अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मतलब हम मिरर से जितनी दूर खड़े हैं, हमारा इमेज जो है वो मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होता है. ओके, मतलब ऑब्जेक्ट का जो एक इमेज होता है हूबहू उसके जैसा ही एक फोटो जो होता है, वो जब प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इमेज. बट हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. मतलब जिस ऑब्जेक्ट से वो जो रेज निकल रहे हैं वो आइदर रिफ्लेक्ट होके या फिर रिफ्रैक्ट होके, व्हेन दे अगेन मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल प्रोड्यूस द सेम पॉइंट एट द ऑब्जेक्ट. क्योंकि यहाँ पे दिया है, और रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस. बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन. सो इमेज के अंदर होता है दो टाइप, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. रियल इमेज मतलब क्या होता है? विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. मतलब रेज को इंटरसेक्ट करके जो ऑब्जेक्ट से निकलता है उसको हम अगर एक स्क्रीन पे, मतलब एक वाइट पेपर पे या फिर किसी भी वॉल पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज. बेस्ट एग्जांपल है सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल में जो हम एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के जो चित्र देखते हैं स्क्रीन पे, दे आर फॉर्म्ड बाय सिनेमा स्क्रीन. ओके, जो वो स्क्रीन होता है उस पर वो प्रोजेक्टर पीछे से आपके लाइट रेज को एमिट करता है और प्रोजेक्ट जो सिनेमा स्क्रीन होता है उसके ऊपर डिस्प्ले होता है. सो देयर वी कैन सी द लाइट रेज. ओके, when if you look upside you can see some white lines which are being projected from the projector and it meets at the screen. So that is the best example, live example of a real image. So उसके बाद हम पढ़ेंगे virtual image. Virtual image क्या होता है? Image cannot be obtained on a screen. बिल्कुल रियल इमेज का रिवर्स. ओके, उसका उल्टा होता है. अब वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर.
द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल मिरर. सो आपके घर में इफ़ यू हैव अ मिरर, ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ मिरर. सो व्हेन यू आर गेटिंग रेडी एंड व्हेन यू आर कॉम्बिंग योर हेयर, आप देखते हैं कि आपके अगर राइट हैंड में कॉम्ब है, यहाँ पे आपने लिया है, तो इमेज में आपको लेफ्ट हैंड में दिखेगा, इन्वर्टेड होता है. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्चुअल इमेज. वो मिरर का जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से दिस थिंग इज हैपनिंग, दैट इज वर्चुअल इमेज इज बीइंग क्रिएटेड. मतलब आपसे सेम डिस्टेंस पे वो मिरर के पीछे आपका इमेज खड़ा होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लैटरल इन्वर्जन. सो यहाँ पे वी कैन सी some diagram of what exactly is lateral inversion and what is virtual image, what is real image. Okay, so when an object is placed in front of a plane mirror, then right side of object appears to become left side of image. Just अभी मैं पहले जो बता रहा था वही है. And the left side of object appears to become right side of the image. Okay, this change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion. मतलब ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, आदमी खड़ा है. ओके, वी हैव अ मिरर हियर. सो ये जो छोटे छोटे लाइन्स यहाँ पे दिए, इट मीन्स दैट दैट इज नॉट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पे जो स्मूथ साइड है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पे ओपेक है. ओपेक मीन्स विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू और एनीथिंग. आप अगर इस पर लाइट छोड़ेंगे भी तो वो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रफ सरफेस, ओपेक है. बहुत कम लाइट बाउंस होता है इस साइड से. सो दिस इज अ मिरर विच इज इन आवर नॉर्मल हाउस. ओके, सो दिस इज द स्मूथ साइड ऑफ द मिरर एंड सम रेज आर बीइंग इंसिडेंट ऑन इट. ओके, इफ यू ट्रेस बैक these lines, here you will have a virtual image. Now if you see in this image, the guy has the mic in his left hand. Okay, and here he has it in his right hand. So this is the object and this is the virtual image. So ये आपको एक ना शॉर्टकट मेथड है. अगर आपको एक दिखाया जाता है कि इमेज एंड दे टेल यू टू फाइंड आउट वेदर इट इज, आपको एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज दिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट रियल इमेज और ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज. तो आपको बोला जाता है कि उसमें से रियल कौन सा है और वर्चुअल कौन सा है, ढूंढो. तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज लुक एट द ऑब्जेक्ट एंड लुक एट द इमेज. In this case, we see that here the guy has the mic in left hand, here the guy has the mic in right hand. So obviously they are inverted, they are inversion. Okay, inversion हो रहा है यहाँ पे, inverted. तो it means this is a virtual image. If यहाँ पे जो इंसान जिस हाथ में उसका माइक है, यहाँ इमेज में भी उसका वही हाथ में माइक है, तो फिर इट मीन्स इट इज़ अ रियल इमेज. ओके, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड में इमेज पकड़ा, माइक पकड़ा है, तो यहाँ इमेज में भी लेफ्ट हैंड ही पकड़ना चाहिए. इट मीन्स इट इज़ अ रियल इमेज. ओके, सो हम यहाँ हमारा आई है, वी आर सीइंग द रिफ्लेक्टेड आईज. सो ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस. दिस इज द लैटरल इन्वर्जन. सो नेक्स्ट, so now we study about the characteristics of some images. Okay, the image of real object is always virtual. मतलब what they are trying to say is, whenever we stand in front of a mirror, this is the best example, it is always virtual. मतलब वो inverted होता है. Such image cannot be taken on a screen. It cannot be, मतलब मिरर के अंदर जो आपका इमेज फॉर्म होता है उसको हम किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. दैट इज इम्पॉसिबल. द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब अगेन द सेम केस ऑफ योर मिरर इन योर हाउस. इरेक्ट मतलब आप जैसे हैं, आपका सिर जहाँ पे होता है वहीं पे इमेज का भी होता है. मतलब इट इज़ नॉट इन्वर्टेड, इट इज़ नॉट टॉपसी टर्वी. मतलब जहाँ आपका सिर है वहाँ पे पाँव हो, इट इज़ नॉट इन्वर्टेड, उल्टा नहीं होता है. So the size of image in a plane mirror is always the same as the size of the object. Again the same case, when you are standing in front of a mirror, आपका जो image आप देख रहे हैं mirror में, it is as same as your body size. That is, it is not less size, it is not shrunken into size or it has not been enlarged also. वो आपके body size से बड़ा भी नहीं होता, body size से छोटा भी नहीं होता, बिल्कुल आपके size का ही होता है. हाँ, sometimes what happens is when you move closer to the mirror, आपको ऐसा लगता है कि आपका इमेज जो है वो भी बड़ा हो रहा है. इट इज़ नॉट.
क्या हो रहा है कि आप मिरर के क्लोज जा रहे हैं, ओके, एंड आपका इमेज जो भी है वो भी मिरर के क्लोज आ रहे हैं अंदर से, ओके। एज आई सेड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इन अ प्लेन मिरर इज इक्वल। सो आप जैसे मूव करोगे यहाँ पे रियल वर्ल्ड में, मिरर वर्ल्ड में भी वो आपके हूबहू ही उल्टा करता रहता है। आप मिरर के पास आओगे तो वो भी मिरर के पास आएगा इमेज, आप मिरर से दूर जाओगे तो वो भी मिरर से दूर जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अभी जैसे मैंने बताया, आप मिरर से जितना दूर खड़े हैं आपका इमेज भी मिरर से उतना ही दूर खड़ा रहता है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्जन हमने पढ़ा है, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Till now we had seen plane mirror and now we shall look at spherical mirror. Spherical mirror. Spherical मतलब sphere. Okay. The mirror is in the form of a sphere. Ball. 3D ball. Okay. Ball 3D ball क्या है? Ball itself is a 3D. Circle is 2D. So let us move. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of a glass. मतलब समझो एक मिरर है, ठीक है, एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ अ बॉल, ओके, और वो बॉल को आप आधा कट कर लो, ठीक है। हियर वी हैव अ बॉल एंड दिस बॉल इज मेड अप ऑफ मिरर प्रॉपर्टी। मतलब मिरर जिस चीज से बनता है, जैसे बनता है इस बॉल को भी वैसे ही क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी कट दिस बॉल इनटू टू हाफ्स, ओके, इन दिस डायरेक्शन, okay, any direction, but here they have shown it in these parts, so left and right, so I'll be cutting it in this direction as my cursor is moving. So we have two mirrors which are formed. One is concave mirror and another one is convex mirror. Concave mirror क्या होता है, ये देखो, this part APB is a concave mirror as mentioned here. Next convex mirror is this part, the black part, okay. So a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at concave surface. मतलब bent in surface. Bent in मतलब अंदर की ओर मुड़ा हुआ, ठीक है, which is bent in. The best example is cave. Okay, cave कैसा होता है? It is like a hollow surface. मतलब एक पहाड़ होता है, उसके अंदर छेद होता है। So ये भी वैसे ही है. It is somewhat similar like a cave. So this is the concave. ये जो black side होता है, दिस इज द कॉनकेव सरफेस और अ कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, द बल्जिंग आउट सरफेस। ओके, बल्जिंग आउट मतलब जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, विच इज बल्जिंग आउट, जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ओके। एंड दीज आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉनकेव मिरर. Now we shall study some terms, okay, terms related to spherical mirrors. All right, so the first one is center of curvature. Okay, center of curvature मतलब C. Center of curvature of a spherical mirror is the center of hollow sphere. ये जो हमने स्फीयर बनाया है आधा काट के, उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट सिंपल, इट इज डिनोटेड बाय C. पोल, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ मिरर. ये जो मिरर हमने बनाया हुआ है कर्व सरफेस, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, okay, the midpoint of this spherical mirror is called the pole. Okay, next the radius of curvature. Obviously center of curvature समझ में आ गया तो radius of curvature भी समझ में आएगा ही. The radius of curvature of a spherical part is the radius of the hollow sphere. ये जिस कॉनकेव मिरर मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर से बना हुआ है ना, उसका जो रेडियस है, मतलब सेंटर टू पोल डिस्टेंस, सेंटर टू पोल डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट स्फेरिकल मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. मतलब ये जो लाइन है, दिस लाइन विच यू कैन सी हियर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो पार करता है, मतलब उस दोनों को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अपर्चर
Okay, aperture, this is pronounced as aperture. Aperture of a spherical mirror is the diameter of reflecting surface of the mirror. मतलब ये जो कॉनकेव मिरर है, सपोज कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर जो भी हो, ये जो एंड पॉइंट है ना, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लें, मतलब ए एंड बी को ज्वाइन कर लें, वो बन जाता है इसका डायमीटर, इस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का